माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज मैं आप लोगों को कुछ थियोरम्स बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थियोरम्स है। इन क्लास 9 में तो है ही है, क्लास 10 में इसका बहुत ही उपयोगी है। तो थियोरम, पहले जो थियोरम है सर्कल्स चैप्टर से थियोरम लिया गया है आपके सिलेबस के हिसाब से। तो थियोरम जो बता रहा है सर्कल्स में, बता रहा है कि पहला थियोरम है आपका ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो चलो पहले एक सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सेंटर है जिसको हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बताता है सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, कोई भी एक कॉर्ड ले लीजिए आप, सपोज AB आप ऐसा कॉर्ड ले लिए हैं। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि सपोज P पे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये और ये आपको दिया गया है। अब बता रहा है कि आपको प्रमाण करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB at right angle to the chord। मीन्स आपको प्रमाण करना है, क्या प्रमाण करना है? OP is perpendicular to AB। बहुत ही सिंपल और साधारण सा है ये। तो पहले जो कुछ भी आपको दिया गया है वो आप यहाँ पर गिवन पे पहले अब लिख लीजिए। अब जो असली जो चीज है कि कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिए और यहाँ पर रीजन लिखिए। तो आपको पहला जो दिमाग में आना चाहिए वो है कि आपको यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है और इसको ज्वाइन करना है, यानी कि आपका OA तक रेडियस बन जाता है और OB भी आपका रेडियस बन जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ज्वाइन OA एंड OB which is equals to radius of the circle। सो पहला नंबर यहाँ पर आप लिखिए ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OPB। इसमें क्या देख रहे हो? पहला है OA is equals to OB। आपका जो रीजन है यहाँ पर वो है रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट है OP is equals to OP, रीजन है कॉमन साइड। फिर है AP is equals to PB, इट इज गिवन। ये स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है। अब स्टेटमेंट 1, 2, 3 से हमें क्या पता चलता है? बाय S these two triangles are congruent, therefore triangle OAP is congruent to triangle OPB from 1, 2 and 3। Now since that these two triangles are congruent, therefore this angle is equals to this angle। Why? CPCT। CPCT means corresponding parts of congruent triangles are equal, therefore angle OPA is equals to angle OPB। This is what? CPCT। This is statement number 4। Now again APB is a straight line, we can see here APB is a straight line। Now this angle plus this angle must be equals to 180 degree, therefore angle OPA plus angle OPB equals to 180 degree। Why? Because APB is a straight line। Since OPA equals to this, already we have got it from 4, so from 4 we get twice of angle OPA equals to 180 degree, or angle OPA equals to 180 by 2 is equals to 90 degree। Hence
This is a perpendicular. One more theorem, my dear students. It is given that the perpendicular to a chord. First, let us draw a circle here. This is a circle with center O. The perpendicular to a chord from the center of the circle. Let this is be a chord PQ. So this is perpendicular. It is given. Let this be R. That means OR is perpendicular to PQ. It is given. Bisect the chord. That means we have to prove that PR equals to, we have to prove PR equals to RQ. This is to prove. Now in this case what we are going to do is, first let us join OP and OQ. Again in the same case we make a column in which we write here statement and here reason. Then name of the triangles, that is OPR and triangle ORQ. So what we know is OP equals to OQ, reason, radius of the circle. Then OR is the common side, and angle ORP equals to angle ORQ equals to 90 degree. It is given. Now from 1 to 3, the reason is by RHS axis, these two triangles are congruent. That is triangle OPR is congruent to triangle ORQ. What is the reason? By RHS, from statement 1, 2, 3, these two triangles are congruent. Since these two triangles are congruent, therefore PR equals to RQ. Therefore CP, which is required to be proved. So one more theorem, एक और theorem है आपके पास, वो है equal chords of a circle are equidistant from center. Okay, before explaining this theorem, I must say to all my viewers that if at all if you are facing any problem regarding the language problem, अगर आपको language problem में कोई दिक्कत है, किसी को अगर दिक्कत हो सकती है कि उसको हिंदी समझ में ना हो, किसी को दिक्कत हो सकती है कि उसको इंग्लिश समझ में ना हो, तो मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि आपको अगर किसी में भी दिक्कत है, कोई भी लैंग्वेज में अगर दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर दीजिएगा. मैं ट्राई करूंगा उस लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए. वैसे में मुझे इंग्लिश, अंग्रेजी के अतिरिक्त और 3 लैंग्वेज आती है, वो है तमिल, तेलुगु और बंगाली. आप किसी भी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं थ्रू कमेंट के जरिए. ओके, सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक, equal chords of a circle are equidistant from a center. So first let us draw a circle with center O. Equal chords of a circle. So let us say here this is P, Q, R, S. Here PQ equals to RS. It is given. Equal chords of a circle are equidistant from the center. That means what? This and this. This is equidistance, means it must be a shortest distance. Let us name as, this is T and this is suppose Z. So this must be perpendicular. So already one more thing we have been given, that OT is perpendicular to PQ and OZ is perpendicular to RS. Now we have to show, we have to prove that OT equals to OZ. To prove OT equals to OZ, this is to prove. These all things you have to write in given, and for simultaneously you have to write it down. As my board is small, I am just writing on the right side of this figure.
Now what we have to do is, at first we have to join this and join this. You can write here join OQ and OS which is equals to the radius of the circle. अभी आपको देखना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमको हमें क्या दिया गया है, PQ is equals to RS दिया हुआ है. Since OT is perpendicular to PQ, since OT and OZ are perpendicular to respective chords, therefore we can say that it bisects. Therefore TQ equals to half of PQ and ZS is half of SR. Clear? But we know that PQ and SR are equal chords. That means this equals to this, which implies that TQ equals to ZS. This is statement number 1. Statement number 2. From 1 and 2 we get this. This is statement number 3. That means what we have got it? We got TQ equals to ZS. We have this. Now let us make a column here. Write over here statement, here reason. What we can write? The triangle TQO and triangle OZS and triangle OZS. What we have? We have OQ equals to OS radius number 1, TQ equals to SZ just now we have got it from statement 3, and this OT is perpendicular to angle OTQ equals to angle OZS equals to 90 degree given. So from this and this, these two triangles are congruent by RHS, hence triangle TOQ is congruent to triangle OZS RHS. Since these two triangles are congruent, therefore this equals to this by CPCT. Therefore OT equals to OZ, which we are required to prove. One more theorem I am going to say here, that is chords of a circle. So let us draw a circle first with center O. Chords of a circle. Let us take this as AB and this as CD. Equidistance from the center. That means what? From here, equidistance means you have to draw a shortest distance perpendicular to this line. That means it must be 90 degree here, and this must be 90 degree here. Let us name the point E and F of the circle are equal. That means we have to show that CD is equals to AB. Now in this proof I'm just make you to explain, and if you still have doubt you can comment me in the comment section. So what we have to prove here? We have to prove here CD equals to AB. At very first what we have to do is we have to join this.
Now we can see that we have two triangles. This is one of the triangle, this is one of the triangle. In this two triangle, this side is equals to this side because the radius of a circle. This is 90 degree, this is 90 degree because it is the, in the question it is given that the chords of a circle equidistance from the center. That means it is equidistance from the center. So this side equals to this side and this equidistance is 90 degree. So by RHS theorem, by RHS axiom, these two triangles are congruent. Since these two triangles are congruent, then what we have, then we can say that ED equals to FB. ED equals to FB. Since ED equals to FB, but what we know from the previous theorem, we have learned that ED equals to half of CD. This is statement 1. Also FB equals to half of AB. This is statement number 2. And since ED equals to FB, that means what? This must be equals to this. Hence CD equals to AB, which is required to be proved. एक बहुत सा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. अगर कोई भी दिक्कत हो तो अवश्य कमेंट कर दीजिएगा. तो थ्योरम में जो बता रहा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है विच पासेस थ्रू, जो सर्कल पास करेगा 3 गिवन पॉइंट्स नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन. 3 पॉइंट लेते हैं जिस 3 पॉइंट के जरिए हम एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों पॉइंट को टच करते हुए निकलेगा. तो चलिए पहले देखते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर A, और एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर B, एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ पर C. अब देखना पड़ेगा कि एक ऐसा सर्कल जो सर्कल A से टच गुजरते हुए, B से गुजरते हुए, C से गुजरते हुए एक सर्कल बनती है. तो सबसे पहले हम AB को ज्वाइन करेंगे और इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ज्योमेट्री के हिसाब से खींचेंगे. तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका बनता है, यहाँ से आप लीजिएगा, ऐसे करके खींचिएगा ये साइड, और यहाँ से ऐसे बनता है, यहाँ से ऐसे बनता है, और यहाँ से ऐसे बनता है. तो फिर आप क्या करिएगा, इसको इस तरह से ज्वाइन कर दीजिएगा. तो ये जो लकीर बनती है, लाइन जो बनती है, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. यहाँ पर कोई भी पॉइंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप ले लीजिए, चाहे आप यहाँ ले लीजिए या यहाँ लीजिए या यहाँ लीजिए. यहाँ से यहाँ जो दूरी रहेगी, यहाँ से यहाँ पर सेम वही दूरी रहेगी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी ऑफ लोकस का जो है कि पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट्स. ओके, सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है. ठीक वही तरह, उसी तरह हम BC को ज्वाइन करेंगे, फिर BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हुए हम इसको ज्वाइन कर देंगे. नाउ वी कैन सी दैट the perpendicular bisector of AB and the perpendicular bisector of BC, they meet at here somewhere the point, let that point be O. Now as I have said you that OA equals to OB. The reason I have said you that each point on the perpendicular bisector, whether the point here or here or here, is equidistant from the point extreme. It is the property of the locus of a point of bisector. Now OA equals to OB, that property you are going to write down that each point on a perpendicular bisector is equidistant from the extreme points. Similarly, if we join this, we get OB equals to OC. The result is again the same. Then from this two statement, we get OA equals to OB equals to OC. That is from the statement 1, 2, we get this. That means this equals to this and this equals to this. That means all are equal.
And one more thing, we should see that the perpendicular bisector of AB and the perpendicular bisector of BC, they meet at the point, only one point, that point is O. Of AB and BC meet at only one point, that is O. Hence, from O, taking the arc radius this, what we can draw? We can draw a circle, that is one and only one circle can be passed through, which is required to be proved.